અમદાવાદમાં આઈસીએસઆઈ દ્વારા 8-9 ઓગસ્ટ દરમિયાન ગવર્નન્સ સ્ટ્રેટેજી અને લીડરશિપ થીમ પર પીએસયુ કોન્ફરન્સ 2026 યોજાઈ હતી. નાણાં મંત્રાલયના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર ક્રાંતિકુમાર અને આઈસીએસઆઈ પ્રમુખ સીએસ પવનજી ચાંડકીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ 2 દિવસીય પરિષદમાં જાહેર ક્ષેત્રના એકમોમાં કંપની સેક્રેટરીઓની વ્યૂહાત્મક ભૂમિકા અને શાસન અંગે વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ કોન્ફરન્સનો મુખ્ય હેતુ પબ્લિક સેક્ટરમાં પારદર્શકતા, જવાબદારી અને મજબૂત નિયમ પાલન વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ બનાવવાનો હતો. कोई भी पीएसयू कंपनी में या कॉरपोरेशन में लगता है तो वहाँ पे गवर्नेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे गवर्नेंस नाम आता है वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी सबसे ऊपर होते हैं, बिकॉज वी आर नोन एज गवर्नेंस प्रोफेशनल्स। और इसके लिए कि ये पब्लिक मनी और पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक गुड फेथ, ये तीनों भी चीज़ें एट ए टाइम हमको इंश्योर करने के लिए हमने और एडिशनली कितना अच्छा विजिलेंट रहना चाहिए, कंप्लायंट रहना चाहिए, गवर्नेंस कंप्लायंस रहना चाहिए, इस हिसाब से आज का ये इसका आउटपुट निकलेगा। और इसका आउटपुट इस हिसाब से निकलेगा कि जिसके अंदर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं बल्कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें से बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे।